के लिए। There was a time I was in Zambia, Africa. We were out in the tribal areas. और जब मैं अफ्रीका में ज़ैम्बिया में था, तो हम वहाँ के ये कबायली इलाकों में थे। And evangelism team were out preaching Jesus to the tribal people of Zambia. और हाँ, मैं और मेरी जो इवेंजलिज्म टीम थी, हम ज़ैम्बिया के कबायली इलाकों में मुनादी कर रहे थे। And we came to the last stop on our mission, which was at a little village called Kabumpo. और वहाँ पे हम आखिर में एक गांव जिसका नाम कपम्पो था, हम वहाँ पहुंचे। Beautiful river. We had actually helped plant a church there several years before. तो वहाँ पे एक खूबसूरत दरिया भी बहा था और वहाँ पे कुछ 4 साल पहले एक खूबसूरत कलीसिया भी कायम हुई थी। And we were going there to encourage this church and see the power of God continue to use this church to reach that village for Jesus. और हम वहाँ पे गए और हमने देखा कि खुदा किस तरह से अपनी कुदरत से उस कलीसिया को इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो सारे इलाका में खुदा की बादशाही फैल जाए। And so we had been pouring out our lives हर कुव्वत के साथ खुदा के कलाम की मुनादी की। हम 2.5 हफ्ते वहाँ पे थे, तो हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। I had pretty much lost my voice. खुदा ने लोगों को शिफा बख्शी, लोगों ने रूह कुदस के बपतिस्मों को हासिल किया और उसकी बड़ी कुदरत का ज़हूर वहाँ पे हुआ। और तब मैंने इस तरह से इकरार किया, और खुदावंद, हाँ, मैं ये कर चुका हूँ, मैंने मुकम्मल कर लिया। And so I was sitting on the bench, and the leader of the church got up, the pastor, and he said, "The power of God is still here. We need to have one more service." तो मैं जब वहाँ पे बैठा होता, बेंच पे बैठा हुआ था तक के, तो चर्च का पास्टर आया, तो उसने मुझे इस तरह से कहा, बेशक खुदा की बहुत कुदरत, खुदा की हजूरी मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि हमें एक और इबादत यहाँ पे करें। And it was about to get dark, and he says, "We can have this service tonight in the dark. What do you think?" He said to me, "Can we do it?" तो मैंने उससे कहा कि अभी तो अंधेरा होने वाला है, यहाँ पे बिजली भी नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पे इबादत कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है, हम कैसे कर सकते हैं? तो उसने मुझे कहा, क्या हम कर सकते हैं इस तरह से? And in my flesh, I wanted to say, "No, no, no." But the Spirit of God said, "Yes, we can have one more service tonight." तो मेरा बदन उस वक़्त कह रहा था कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का रूह इस तरह से कह रहा था कि हाँ, हम कर सकते हैं, एक और इबादत यहाँ पे कर सकते हैं। So he sent everybody home, go and eat some food, and then come back in the dark, and we'll have this service. और पादरी साहब ने वो सारे लोगों को अपने घरों में भेजा ताकि वो खाना खाएं और दोबारा से वापस आएं, हम फिर से मिलकर इबादत करेंगे। And that night, God moved mightily again. In fact, the whole youth choir came forward and repented because they said they were living double lives, Sundays for Jesus and the rest of the week for themselves. तो इस तरह से खुदा ने उस रात कलीसिया के लोगों में बड़ी कुदरत से काम किया। वहाँ पे जो क्वायर थी उसमें खुदा ने ज़ाहिर किया, क्योंकि वो 2 तरह की ज़िंदगी जी रहे थे। इतवार को वो खुदा की इबादत करते थे और बाकी सारे दिनों में अपनी ज़िंदगी और अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक जी रहे थे। तो उन सब ने तौबा की और खुदा ने अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया। In other words, they realized they were going over the wrong bridge of death and destruction instead of Jesus's bridge, the way of life. और उस वक़्त लोगों ने इस तरह से इकरार किया कि हम उस पुल की तरफ जा रहे थे, जो तबाही की तरफ लेके जाता है, हलाकत की तरफ लेके जाता है, लेकिन अब से हम खुदा के पुल की तरफ, जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेके जाता है, हम उस पर चलना चाहते हैं। And so now the service was over. God had done wonderful things, and we had walked for about 2 blocks in the dark to where we were staying. और तो हम इस तरह से वो सारी इबादत जब खत्म हुई, खुदा ने अपनी बड़ी कुदरत को ज़ाहिर किया, तो हम कुछ ही दूर जहाँ पे हमने रुकना था, हम वहाँ पे चले गए। And so I said, "I'm going to bed. No one talk to me. No one wake me up. And tomorrow we'll leave to go back to America." और मैंने इस तरह से कहा कि कोई भी, मैं अभी लेटने लगा हूँ, कोई भी मुझे ना बुलाए, कोई भी मुझे ना उठाए, हम सुबह होते ही वापस चले जाएँगे, हम अमेरिका जाएँगे। And this room was full of mosquitoes, with malaria mosquitoes. And so I got underneath my mesh screen, and I just fell right asleep. तो वो कमरा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर थे, मलेरिया वाले मच्छर थे और बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था, लेकिन मैं सो गया। And so then, before the sun rose, it was still dark. Someone in that village
began to ring this giant bell they had, and bang, bang, bang. तो अभी अंधेरा ही था, सुबह की रोशनी नहीं हुई थी और कोई शख्स चर्च में गया और उसने चर्च की बेल इस तरह से जोर जोर से बजाना शुरू कर दी। It was so loud, it was like it was in my head. Bang, 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 and I woke up. What? और उस चर्च की घंटी की आवाज बहुत ज्यादा ऊंची थी और वो इस तरह से मेरे सर से टकरा रही थी, टन 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 इस तरह से। And we had been there for like 4 days and no one had rung this bell, and now they're ringing this bell. और हम 4 दिन से वहां पे मौजूद थे लेकिन किसी ने वो बेल नहीं बजाई थी। लेकिन आज जब हमने जाना है तो कोई इस तरह से जोर जोर से। And it was like this guy had one job in his whole life, and that was to wake everybody up in that village, and he just kept ringing it and ringing it and ringing it. तो इस तरह से महसूस हो रहा था कि इस बंदे के पास सिर्फ एक ही काम है और ये अपने पूरे जोर से इस घंटी को बजा रहा है ताकि सारे लोगों को उठा सके, और वो सबको उठाना चाहता है, ऐसा लग रहा था। And I prayed, oh God, just make him stop. Please make him. I just want to go back to sleep. तो मैं खुदा से इस तरह से दुआ कर रहा था, खुदावंद इस बंदे को रोक ताकि ये बंदा घंटी बजाना बंद कर दे, मैं 1 घंटा और सोना चाहता हूँ। And he just kept ringing that bell as though I'm going to make sure everybody gets up. Everybody wakes up in this village. तो तब ऐसा हुआ कि मुझे ऐसे यकीन है कि गांव का हर बंदा उस बेल की वजह से उठ चुका था तब तक। And then the Holy Spirit said, I did this on purpose. लेकिन रूहुल कुदस का ये सब कुछ करने का वहां पे एक खास मकसद था। I wanted to give you a message that you would never forget. मैं आपको